Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start with the new topic today, and it is about the trunking. That is basically related to the traffic engineering of the communication systems. So we are not going to be discussing the complete traffic engineering over there, but we are going to discuss some of the basics of the traffic engineering, and we are going to get started with the trunking theory. Trunking is just nothing. Is basically is a system which accommodate a larger number of users with the limited resources. तो अगर आपके सिस्टम के अंदर यूजर्स बहुत हैं तो यू हैव टू मेक एन स्ट्रेटजी कोई स्टेटिस्टिक एनालिसिस आपको करने पड़ते हैं and to accommodate effectively that number of user into a shorter number of channels के अंदर आप उसको accommodate करते हैं. For instance, any operator have got a huge number of their customers. For instance, it have got 2 lakh customers in a city. किसी city के अंदर उसके 2 लाख customers हैं. And we have gotten the operator have gotten a very small number of the channels available with him. For instance के उसके पास channels जो हैं वो total 50,000 है. So that 2 lakh customer have to be adjusted into the 50,000 with the 50,000 effectively it should be accommodated there. So the theory or the strategy which is behind that, how to accommodate that all user with that limited resources, उस limited resources के अंदर हम उसको कैसे accommodate कर सकें. So that is regarding the statistical analysis, and you have to be design the theory. You have to be design the system for trunking the channels. Um, for that purpose, we are going to be studying one of the small portion here in this our course, which is about the trunking theory. So, all in all, the trunking is a statistical concept which allows a large number of users to share a relatively small number of channels. बहुत सारे users हैं और बहुत छोटे से channels हैं, उनके अंदर हमने accommodate करने, providing access on demand from the pool of available channels. जितने आपके पास available channels हैं उसकी pool में से आपने accommodate करना है user को. The basis of that fact is because we have a more number of users, but all are not going to be demanding at the same time. मसलन अगर आपके 10 लोगों के पास मोबाइल है, सो इट डजंट मीन टू बी कि 10 लोग एक ही टाइम में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. So the statistics is dependent upon the what is the frequency of the demanding the channel is over here. How frequently the user are going to be demanding the channel. Channel को कितने frequently वो demand कर रहे हैं, and we are going to be designing the system for that particular statistics. So relatively small number of channels can serve a large number of users, since all users are not demanding access and utilization of the system at the same time. Same time के ऊपर वो नहीं गिरा. So how can you design this? The one of the important parameters over here is said to be the grade of service. Grade of service. It means to be, for instance, if a user is going to be want to make a call and request for any channel, so if it is readily available with the operator and it can effectively provide a channel to the user, so it will have a certain good grade of service. Okay, so this is said to be is the measure of the ability of the system that it can provide a channel readily to the user. जब user आता है उसको readily कोई channel दे दिया जाता है, तो it is said to be उसकी grade of service जो है वो कितनी अच्छी या बुरी. तो ये ability सिस्टम की कि वो चैनल को एलोकेट कर सकता है टू द यूजर इज सेड टू बी दैट एबिलिटी इज अ मेजर और इज अ पैरामीटर इज सेड टू बी अ ग्रेड ऑफ सर्विस. सो द ग्रेड ऑफ सर्विस मे बी अ good or it may be a bad of that certain operators. So operator is an always desirable that every particular user should be having a good should be provided with a good services. तो जब कभी उसको चैनल नहीं मिलता और वो चैनल नहीं एलोकेट कर सकता, अगर सिस्टम यूज़र को एकोमोडेट नहीं कर सकता, तो इट मीन्स टू बी यूज़र विल नॉट बी अ मोर लॉयल with the operator. He can
shift its number to the other operator, किसी और operator से वो number higher ले लेता है, and it will be. So the grade of service is an important parameter. One of the important thing is when the grade of the ability, when it is going to be tested, किस वक्त टेस्ट की जाती है, या कौन सा ऐसा टाइम है जिसके अंदर वी हैव टू डिजाइन अवर सिस्टम. So in a daytime, in a 24 hours, we must have to be select in a particular hour जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स जो हैं वो किसी चैनल को डिमांड करते हैं. फॉर इंस्टेंस, मसलन अगर सुबह फजर का वक्त होता है तो फजर के वक्त तकरीबन कोई भी यूज़र या बहुत कम यूज़र जो हैं वो किसी चैनल की या कोई कॉल मेक कर रहे होते हैं. But in a 24 hours, what happened? There is some duration in which the most number of the user are demanding the channel को demand कर सकते हैं. पाकिस्तान के अंदर जो ग्रेड ऑफ सर्विस को जज करने का जो स्लॉट है, दिस इज सेड टू बी बिजिएस्ट आवर. उसको स्लॉट को बिजिएस्ट आवर कहते हैं. तो पाकिस्तान के अंदर जो बिजिएस्ट आवर काउंट किया जाता है वो 6 to 8 PM है. 6 to 8 PM. It means to be 6 to 8 PM. This is a window in which the most number of the users can make a call. तो स्टेटिस्टिक्स बताती हैं कि इस टाइम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स मेक्स हो सकती हैं इन अ 24 आवर ड्यूरेशन के अंदर. So the system, the operator are going to be design the system with that busiest hour statistics के हिसाब से वो अपने system को design करते हैं. So the busiest hours is that time in which the maximum number of the users are going to be demanding the channels, and this is purely based on to the statistics of the operator. Operator की एक अपनी statistics होती है, उन statistics को वो जमा करता रहता है कि इस वक्त कितने users जो हैं वो इस चीज़ को demand कर रहे होते हैं. So in सर 6 to 8 है या 4 to 6 है? जी 4 to 6 है या ये 4 to 6 डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट होते हैं. मसलन आप यूरोप जाएंगे, अगर आप यूके जाएंगे, सो इट विल बी बिजिएस्ट आवर इज 4 to 6. लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर 6 to 8 है जो नॉर्मली जो है. एंड दिस इज आल्सो डिपेंडेड अपॉन द डेज एज वेल. फॉर एग्जांपल, अगर यूके के अंदर थर्सडे और फ्राइडे जो होता है वो सबसे ऐसा दिन है कि इसकी इस बिजिएस्ट आवर के अंदर सबसे ज़्यादा कॉल्स मेक्स की जाती है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू डिज़ाइन अ ट्रंकिंग सिस्टम, कुछ आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप जो है ना स्टेट्स को देखने पड़ते हैं कि एट वर्ड पर्टिकुलर डे, एट अ बिजिएस्ट आवर ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, what is the statistics that how much user are going to be wanted to request for the occupation of the channels. So the grade of service is going to be identified, or it is going to be quantified with respect to that busiest hour. Is busiest hour से वो quantify किया जाता है. So this is the basics of the traffic. तो इन statistics को देखते हुए we have to design our trunking system. ट्रंकिंग सिस्टम को फिर से अगर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, यू मस्ट नो दैट व्हाट यू मीन बाय ट्रंकिंग. एक एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ कि जैसे द ट्रंक ऑफ द ट्री, यानी दरख्त का जो ट्रंक होता है, ट्रंक जो उसका तना होता है, तो जितने भी मिनरल्स होते हैं या पानी होता है, वट एवर इज गोइंग टू बी फ्लोन थ्रू दैट ट्रंक, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस ट्रंक से गुजर के जाके तो पत्तों में और जहाँ भी जाती हैं या टहनियों में approach करती हैं. So this is said to be a trunk. So trunk is a limited thing, and you have to utilize it with a very effectively. उसकी इफेक्शन को जज करने के लिए, ग्रेड करने के लिए, we have a services is said to be grade of service, GOS के नाम से जाना जाता है, and it will be counted into the busiest hour. busiest hour के अंदर हम उसको मोल्ड करते हैं या उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं. ओके, ग्रेड ऑफ सर्विस यूजुअली मेजर इन टू वे. दो किस्म की ग्रेड ऑफ सर्विसेज है. द ग्रेड ऑफ सर्विस फॉर अ सिस्टम वेयर द कॉल्स ब्लॉक्ड. मसलन अगर आपके पास चैनल नहीं है सिस्टम के अंदर, तो बस वो यूजर को ब्लॉक कर देता है. सो इट्स सेड टू बी blocking probability, the probability of blocking. So if there is a blocking system, it means to be if a call comes on, it has been blocked there,
because there was not availability of the resource channel. चैनल का जो रिसोर्स था उसके अंदर हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी सिस्टम के अंदर, so the call will be blocked there without seeing anything else. तो बस वो कॉल initially drop हो जाती थी and that will not be entertained. वो उस वक्त entertain नहीं होती थी. The second thing, so you see that कि what is the probability of the blocking, यानी blocking की probability कितनी है. So it will be comes on from the statistics से हमारे पास आती है. Is it right? कि जी out of 100 there is a one call has been blocked. 100 में से एक कॉल ब्लॉक हो गई. So it's said to be probability of the blocking. So the grade of service will then be equal to 1%. 1%. It means to be 1 out of the 100 calls has been dropped. वो dropped हो गई. The second phenomena सर इसकी is समझ नहीं सर, ये दोबारा बता रहे सर. इसमें होता है कि मसलन अब 100 यूजर्स ने कॉल किए. आउट ऑफ 100 the 99 has been given a channel. 99 को चैनल दे दिया गया, लेकिन एक के लिए चैनल मौजूद ही नहीं था, तो उसको ब्लॉक कर दिया गया है. तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लॉकिंग क्या है, इज 1 आउट ऑफ 100 है. 1 आउट ऑफ 100. इज इट राइट? तो इट मीन्स टू बी 1% इज द ग्रेड ऑफ सर्विस. ग्रेड ऑफ सर्विस इस वक्त आपके पास 1% है. ये वो 1% का ग्रेड ऑफ सर्विस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग जो है वो 1% भी बहुत ज़्यादा होती है. सो हमारे जो टेलीकॉम अथॉरिटीज़ होती हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान टेलीकॉम पीटीए के नाम से, तो वो इंश्योर कराती हैं टू द ऑपरेटर that you must not give an probability of blocking more than 1%. एक से ज़्यादा 1% से ज़्यादा आपने 1% भी बहुत बड़ी ब्लॉकिंग है. Is it right? So the probability of the blocking. लेकिन आपने, मैं पहले भी मिसाल दी थी आप लोगों को, जब कभी ऐसा कोई इवेंट आ जाता है, फॉर इंस्टेंस अगर कभी जिलजिला आया, तो जिलजिले के अंदर सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं थ्रू द मोबाइल, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए. व्हाट विल हैपन, तो आपका ग्रेड ऑफ सर्विस वहाँ पे तकरीबन आपका जो है वो 50% से अबाउ चला जाता है. तो 50, 60 या 70% लोगों को कॉल मिलती ही नहीं है, बिकॉज द ट्रंक सिस्टम आपने बड़ी हैवी ट्रैफिक जनरेट की ऑल ऑफ ए सडन, एंड दिस इज एन इवेंट बेस्ड, वो इवेंट बेस्ड होती है. सो दैट व्हेन एवर द ट्रैफिक हैज बीन क्रिएटेड, तो आपका सिस्टम जो है वो उसको कोप ही नहीं कर सकता. So we are not going to be design a system for that particular situation. उन situations के लिए तो हम सिस्टम को नहीं डिजाइन करते. हम जो नॉर्मली डेली रूटीन के अंदर जो बिजिएस्ट आवर होता है, जो कि नॉर्मल हालातों के अंदर होता है, so the system is going to be designed, a trunking theory is designed for that particular busiest hour के लिए इस्तेमाल होता है. Is it right? So दो किस्म की वो ग्रेड ऑफ सर्विस बताएं. One is said to be call arrived and the channel is not available, so it will be blocked eventually वो blocked हो जाएगा. The second thing is this, if a call comes on, there was no availability of the channel की availability नहीं थी, but it will be remain in a queue के अंदर मौजूद होती है. उस कॉल को ड्रॉप नहीं किया जाता, it will be remain in a queue. ठीक है? So whenever it is remained in a queue and until and unless we have got the availability of the channel has been created, so that the channel will be assigned to the user को assign कर दिया जाता है. So but लेकिन ये भी इस तरह नहीं है that आपने कभी आप लोगों को तो याद नहीं होगा, हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि हम पीटी सेल को जब ट्रंक कॉल करते थे, एक शहर से दूसरे शहर को में जब कॉल्स करते थे बाय यूजिंग अ टेलीफोन्स, लैंड लाइन्स की मदद से, तो हम ऑपरेटर को कहते थे कि आप दूसरे शहर की आप जो है उसको मिला दें, फोन नंबर मिला दें. तो देन वी विल हैव टू वेट फॉर 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर और एन आवर. सो दैट वाज एन एग्रीड अपॉन बिटवीन द यूजर एंड अ कंपनी और यूजर के दरमियान में ये एग्रीड अपॉन फिनोमिना होता था. तो वो ट्रंक कॉल फिर वो उस वक्त मिलाता था एंड देन इट विल, तो वो डिले के अंदर विद द डिले जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता था. सो इन टू द मोबाइल सिस्टम इज आल्सो इज सेड टू बी द कॉल मे बी डिलेड, बट इट इज नॉट मोर देन 2-3 या 4 या 5 सेकेंड्स के डिले के साथ जो है. आपने कभी देखो तो आपने जब मोबाइल से कोई कॉल मिलाई तो एकदम से ड्रॉप हो गई,
सिस्टम बिजी का मैसेज आ गया, बस आपकी कॉल इवेंचुअली ड्रॉप हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी कॉल ड्रॉप नहीं होती है, लेकिन इट विल बी रिमेन इन अ क्यू, बिकॉज वो एक लंबे अरसे वो आपको सिस्टम बिजी तो दे रहा होता है, लेकिन वो आपको क्यू के अंदर रखता है एज लॉन्ग एज आपकी 3 4 5 मिनट के सेकेंड्स के अंदर if there is some channels is available become vacant and it's available, then it will be allocated to you, वो उस यूजर को allocate हो जाता था। So the probability of call is block is a one phenomena, and the other is said to be the probability the call will be delayed more than specified queue time। मसलन आपके 5 सेकंड, आप 5 सेकंड इंतजार कर सकते हैं, 10 सेकंड इंतजार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप इंतजार नहीं कर सकते। सो व्हाट वुड हैपन दैट कि आपकी फिर कॉल ड्रॉप हो जाएगी। देन प्रोबेबिलिटी दैट योर कॉल हैज बीन डिलेड फ्रॉम द स्पेसिफाइड टाइम, और फिर उसके बाद योर कॉल विल बी डिलेड। सो दिस इज द अदर फिनोमिना। एक फिनोमिना के अंदर स्ट्रेट अवे देयर इज अ कॉल इज ड्रॉप। द सेकंड फिनोमिना is stated that your call will be delayed for some time, but it will be entertained as long as your the channel will be available. If not, the channel is not available within that specified time, your call will be dropped। आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। ठीक है जी, दिस इज अदर। एक और चीज जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, दिस इज द अराइवल ऑफ कॉल्स, कॉल्स की अराइवल, एंड दिस इज इंटायरली अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। शायद आपने प्रोबेबिलिटीज के अंदर पढ़ा हो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ काइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इज अ प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह के आप ये समझें कि आपका जब रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, सो इन ऑन अ रेलवे स्टेशन क्या होता है कि अराइवल ऑफ द पैसेंजर्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपकी रेलवे स्टेशन पे 10 बजे गाड़ी ने स्टार्ट होना है, चलना है, सो व्हाट्स हैपन, इट मे हैपन दैट कि 10 बजे के आसपास जो है वो पैसेंजर ज़्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू कि 1 घंटा पहले आ गए। या ऐसा भी नहीं होगा कि जो आपका गाड़ी के चलने के बाद पैसेंजर पहुंचे। इज इट राइट? अब मेरा जैसा बंदा जो होगा वो रेलवे स्टेशन के ऊपर व्हेन द कार इज हैव टू बी मूव्ड एट 10 PM, तो वो एग्जैक्ट 10 बजे ही पहुंचेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी। लेकिन जो ज्यादा केयरफुल आदमी होगा तो इट मीन्स टू बी इट विल हैव टू अराइव आधा घंटा पहले पहुंच गया या 20 मिनट पहले पहुंच गया, टू दैट ही इज मोर कॉन्शियस दैट कि आपकी ट्रेन न मिस हो जाए। सो द अराइवल ऑफ द पैसेंजर्स एट द रेलवे स्टेशन इज सेड टू बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसी तरह अगर आपका जो दुकान है, दुकान के ऊपर अगर कोई कस्टमर्स जा रहे होते हैं, तो द अराइवल ऑफ द कस्टमर्स एट द शॉप्स इज आल्सो इज सेड टू बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से जा रहे होते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये जो शादियां होती हैं तो इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, वहाँ भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसका कर्व जो है वो डेट विल बी द डिफरेंट। मसलन अगर आपको 8 बजे शाम बुलाया गया है तो आप 10 बजे पहुंचते हैं शादी पे। ठीक है जी। तो कर्व जो है वो आपका वही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अराइवल ऑफ द पैसेंजर, द अराइवल ऑफ द गेस्ट, द अराइवल ऑफ द कस्टमर्स एट द शॉप, दैट ऑल आर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो आपकी कम्युनिकेशन की ट्रैफिक इंजीनियरिंग है उसके अंदर भी जो अराइवल ऑफ कॉल्स हैं, दिस इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसकी एक पीक होती है, एंड एट दैट पीक सो योर ट्रंकिंग सिस्टम इज डिजाइन फॉर दैट ड्यूरेशन। मसलन अगर आपका 6:30 से लेकर 7:30 तक के दरमियान में पीक आ जाती है, तो उसी पीक को मॉडल किया जाता है फॉर इस ट्रंकिंग, उस ट्रंकिंग सिस्टम को मॉडल किया जाता है उसी पीक से। मसलन उसी वक्त 1000 कस्टमर्स आते हैं, उसी वक्त ही 1000 यूजर्स अराइव्ड होते हैं। ठीक है, इट विल गेट एन मैक्सिमम पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इज इट राइट? So that it is going to be, the trunking theory is designed for, and it is a probabilistic statistic for a Poisson distribution probability के लिए डिजाइन किए जाते हैं। So we have got two kind of the probability of blocking and the probability the call is delay. So those systems मौजूद हैं for the grade of service के लिए। Okay जी, we want to study some of the quantities there. क्या क्या क्वांटिटीज इस्तेमाल होती है? इज द ट्रैफिक ऑफर्ड बाय अ सिंगल यूजर इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड बाय AU you can see it over here is an AU is equal to lambda h. Lambda is the average number of calls per unit of time. For instance, अगर कोई 5 calls
पर आवर करता है, 5 कॉल्स पर आवर. So it's said to be the frequency of the call from a single user, एक single user के लिए. And H is said to be duration of the call. ये कॉल की ड्यूरेशन है. फॉर इंस्टेंस के अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 3 मिनट्स के लिए एक यूज़र कॉल करता है ऑन एवरेज, 3 मिनट्स के लिए कॉल करता है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी कॉल इन बिजिएस्ट आवर वो 5 कॉल्स पर आवर एक एवरेज कॉल कर रहा है. सर ये So, लेमडा वेवलेंथ नहीं है सर? जी वेवलेंथ नहीं है सर ये लेमडा क्या? वेवलेंथ नहीं है सर ये वेवलेंथ? नहीं ये वेवलेंथ नहीं है. दिस इज सेड टू बी द फ्रीक्वेंसी. वो लैम्डा और है जी, वो जो हम वेवलेंथ की बात करते हैं ना. तो अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, यू कैन फाइंड सम अदर सिंबल फॉर दैट, ठीक है. अदरवाइज दिस लैम्डा इज सेड टू बी रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉल. यानी कि आपकी, लेट्स सपोज, मैं आपको पहले भी बताया कि अगर आप लेट्स सपोज कहते हैं कि 5 कॉल्स पर आवर, लेकिन ये कौन सा वाला आवर है? दिस इज द बिजिएस्ट आवर. ये वो बिजिएस्ट आवर है जिसमें हमने ट्रंक सिस्टम को डिजाइन किया हुआ है. तो बिजिएस्ट आवर है, ठीक है. और सर ये एयू क्या है सर? सॉरी, एयू क्या है सर? ये एयू आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, जरा से आप कुछ वॉल्यूम वगैरह को ठीक करेंगे इसको, ठीक है. अब आ रही है सर आवाज? जी जी बताएं. सर ये एयू क्या है सर? ये आपने बताया. AU is the traffic intensity from the single user in a cell. सेल के अंदर जो सिंगल यूजर है उसकी एवरेज कॉल्स ट्रैफिक इंटेंसिटी, वो कितनी कॉल्स को जनरेट कर रहा है, कितनी देर के लिए कर रहा है. इज इट राइट? मसलन आप जरा से अगर कॉपी के अंदर लिख लें कि लैम्डा इज इक्वल टू फॉर इंस्टेंस 5 कॉल्स पर आवर, 5 कॉल्स पर आवर, यानी एक घंटे में 5 कॉल्स कर रहा है एक यूजर. Is it right? This is said to be average. ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ. It comes on from the statistics. Statistics से फाइंड आउट किया जाता है. जो स्टेटिस्टिक्स जो यूजर की कस्टमर से जो कस्टमर जो ऑपरेटर की कस्टमर से उनको रिसीव हो रही है एट अ बिजिएस्ट आवर. एंड एच, हाउ मच एवरेज ड्यूरेशन हैज बीन ऑक्युपाइड बाय अ सिंगल यूजर. एक यूजर जो है वो कितनी ड्यूरेशन की कॉल कर रहा है. फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि यार वो 3 मिनट्स की कॉल कर रहा है. So the intensity of the user will then be equal to lambda multiplied by h. Lambda is 5 calls per hour. ये अगर आप कॉपी के अंदर लिख लें, so it's said to be 5 calls per hour multiplied by 3 minutes. What will be the answer? सर मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा. Yes, you have to convert the minute into the hour. So you need to divide it with the 60. 60 से आप divide कर दें तो 3 divided by 60 हो जाएगी. 180 into 5. ठीक है जी. 1/4. So you just have to calculate the intensity or the traffic intensity of a single user. एक user की आपकी traffic intensity आपको received हो जाएगी. डिवाइड करेंगे सर? जी हाँ, डिवाइड करेंगे पर आवर है ना. तो आवर को बनाने के लिए 3 मिनट को आवर बनाने के लिए यू हैव टू डिवाइड इट विद दिस. तो 3 डिवाइड बाय 60 कर देंगे, ठीक है. तो दैट विल बी सर ये लैम्डा एक यूजर का होगा. ये एक यूजर का है. ये एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स पर यूजर है. एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स पर यूनिट ऑफ टाइम फॉर वन यूजर, एक यूजर के लिए. ठीक है. अच्छा सर इससे 1/4 आता है सर, तो इसका मतलब क्या है 1/4 का? यानी ये ट्रैफिक इंटेंसिटी है. दिस इज अ ट्रैफिक ऑफ अ सिंगल यूजर. यानी एक यूजर पॉइंट क्या है जी, 0.25 आ रहा है. 1/4 सर. हाँ जी, 0.25 आ रहा है. 0.25 इज द ट्रैफिक इंटेंसिटी ऑफ अ सिंगल यूजर. एक यूजर की ट्रैफिक इंटेंसिटी है. दिस इज अ पैरामीटर, ठीक है जी. और ये हो गया जी. ये कॉल्स होता है, या इसको हम, इसका यूनिट अर्लिंग होता है. अर्लिंग, ERLANG, अर्लिंग, ठीक है. तो ये अर्लिंग नहीं, चूंकि ये थ्योरी डिड्यूस की हुई है तो उसके नाम पे उसको डिवाइड करने के लिए उसके नाम से ये यूनिट आइडेंटिफाई हुए हैं. सो द यूनिट बेसिकली इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन इसको लिटरेचर के अंदर अर्लिंग के नाम से, अगर आप कुछ भी ना लिखें सो दैट फाइन, लेकिन अगर आप अर्लिंग भी लिख लें तो दैट इज फाइन. सो देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर हियर, ठीक है जी. सो द ट्रैफिक इंटेंसिटी ओवर देयर ऑफ अ सिंगल यूजर इज द, लेट्स सपोज आपने कहा 0.25 अर्लिंग
is the traffic intensity of this is the average traffic intensity of a single user. एक single user की आपकी एवरेज ट्रैफिक इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी हम कैसे कहेंगे कि जी एक यूजर कितना टाइम ऑक्यूपाई कर रहा है एक बिजिएस्ट आवर के अंदर, वो कॉल को कितना ऑक्यूपाई कर रहा है और कितनी चैनल को कितने टाइम के लिए अपने पास रखता है. So it's going to be represented with that particular component. The second thing, for a system with U user, the total of traffic intensity is going to be represented A is equal to UAU. UAU. U is the total number of the user. AU is the traffic average traffic intensity of a single user. एक single user. तो सारे users के साथ multiply कर दें. So what will happen that this is the total traffic intensity of a user in a single cell. एक सेल के अंदर, ये आई एम डिजाइनिंग फॉर अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के लिए मैं डिजाइन कर रहा हूं इसको. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यानी AU, that is the average traffic intensity of a single user. If it is going to be multiplied with the total number of the user in a cell, so that is the total traffic. This is the total traffic offered by the system. System आपको ऑफर कर रहा है इसके. So A is equal to UAU is the total traffic intensity within a single cell. एक सेल के अंदर जितने यूजर सबको मिला करके हमें ये ट्रैफिक इंटेंसिटी मिल रही है. इज इट राइट? सर लेकिन जरूरी तो नहीं है सर कि हर एक यूजर का इंटेंसिटी सर वो क्या हो जाए AU हो सर, डिफरेंट हो सकता है. AU तो मैंने आपको कहा था दिस वाज द एवरेज, बताया था ना आपको. अच्छा सही सही और सही. जब मैं एवरेज की बात करता हूं तो फिर एवरेज तो बस मीन नहीं होता है ना. तो मीन से आप टोटल नंबर ऑफ यूजर से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट एन टोटल ऑफर ट्रैफिक जो आपको ऑफर्ड हो रही है सिस्टम के अंदर. सो दैट विल बी इनटू द सिंगल सेल. ये सिंगल सेल की बात नहीं कर रहा हूं आपको, सिंगल सेल. एंड अगेन द वैल्यू ऑफ दैट A, the unit of A will be is in Erlang है. For example, if you have got a total of 60 users, अगर आपके पास 60 users हैं, so A is equal to UAU or 0.25 आपके पास है. So 160 divided by 4 is equal to 15. So A, the total traffic intensity offered by the system is said to be a 15. तो वो एक quantity आ गई आपके पास. The quantity is going to be identified. So 15 will be there. Is it right? U आपने 60 रख दिया, AU आपने 1/4 रख दिया. The answer is 15. So means to be total of a traffic in a single cell is going to be represented as an 15. 15 आपके पास आ गया. Calls arrives as a Poisson distribution. We already discussed this. All user may request service at any time. ये हो सकता है कि आपके सारे यूजर्स जो हैं वो एक टाइम के ऊपर आपको, लेकिन हम तो डिजाइन करते हैं फॉर स्पेसिफिक बिजी आवर्स के लिए. सो द A is set to be generated traffic and C is the number of the channels. यानी आपके पास अवेलेबल चैनल्स कितने हैं. सो दीज ऑल. तो दो चीजें हैं जी, दो चीजें. वी यूज to design or to statistically analyze or model the trunking system by using the two kind of the formulas, जिसको हम Erlang B फार्मूला कहते हैं और एक को Erlang C फार्मूला कहते हैं. क्योंकि Erlang ने इसको डिड्यूस किए हुए हैं, तो बेसिकली दीज आर द टू काइंड ऑफ द फार्मूला. दो फार्मूले लगते हैं ट्रैकिंग सिस्टम के. वी आर नॉट गोइंग टू बी वेरीफाई और टू डिराइव दीज फार्मूलाज because it had gone a very deep background of the statistics behind it, so that हमने सिर्फ उसके फार्मूले को यहाँ देखना है, and then we have to be utilize it into our problem. हम अपने problems के अंदर उसको utilize करेंगे. So दो किस्म के फार्मूले. One is said to be Erlang B formula and the other is said to be Erlang C formula. ठीक हो गया जी. Erlang B formula is adopted and uses for the probability of blocking के लिए इस्तेमाल होता है. Is a probability. There was no delay whenever the user come on and requested for the channel. Then what will happen that there was no availability of the channel. The call will be blocked. वो blocker. तो grade of service is going to be representing with the probability of the blocking. कि probability of blocking क्या है.
and the probability of blocking is now going to be identified, or it is represented with the formula is said to be a power of c divided by c factorial divided by summation and a power of k divided by k factorial से represent होता है. For instance, जैसे हमने अभी मैंने एक प्रॉब्लम आपको कराया कि a की वैल्यू आपके पास 15 आ गई है, यूजर आपके पास 60 थे, यू आपके पास 60 थे, तो a की वैल्यू आपके पास 15 आ गई थी. And if you are going to be finding the probability of the blocking, अगर आप probability grade of service को मालूम करना चाहेंगे तो A के अंदर 15 पुट कर लेंगे, and the C is the number of channels, let's suppose are 40. तो A power of 40 divided by 40 factorial divided by summation from K is equal to 0 to 40 and 15 power of K divided by K factorial. आप इसको अगर solve करेंगे, what will be the answer there? Can you do this? A की वैल्यू आप डाल दे 15, C की वैल्यू आप डाल दे 40 और just solve this. So you will see that के A power of 40 divided by 40 और निचला वाला जो चीज होगी वो K की 0 से स्टार्ट हो जाएगी. So 15 power of 0 divided by 0 factorial plus 15 power of 1 divided by 1 factorial plus 15 power of 2 divided by 2 factorial and up to 15 power of 40 divided by 40 factorial. So it's a hell of a job to do it by using even a calculator. Calculator पे भी शायद आप ये आसानी से ना कर सकें. So there is no need to be calculating the grade of service by using this formula. इस फार्मूले को इस्तेमाल करके grade of service को normally नहीं find किया जा सकता, but it is now going to be generated by using the computer simulation program से इन फार्मूले से values को निकाल दी जाती हैं. Is it right? Now notice that we have got the Erlang B system का एक टेबल यहाँ मौजूद है, and we can find out that जो already computer program से इन टेबल से values को निकाल लिया गया है by using the same formula दिया. You see that in a vertical first column we have a number of the channels there, and the capacity in Erlang for a grade of service is going to be represented over here. ये जो grade of service है is going to be representing for the blocking के लिए है. When the call has been arrived and there was no channel and the call is now blocked, call आपकी block हो जाती है. Starting from over here, from the first column, number of channels 2, 5, 10, 20, 40, 100. These are the common channel number of channels in a cell के अंदर है. और probability is 0.01, 0.01 से क्या मुराद है? What does it mean? 0.01 probability is 0.01. How much percent is this? ये फार्मूले से 0.01 है. 1%. 1%. This is said to be 1%. जिस समय आपको कहना था कि grade of service आपके पास 1% है. Is it right? इसी तरह 0.05 है, 005 है, तो ये आपके पास 0.5% है. 0.5%. ठीक है? And this 0.002 is said to be 0.2%. Or 0.001 is 0.1%. So we have got this. ठीक हो गया? मसलन अगर आपको A मालूम करना है, you don't have an A, then what's happened? Let's suppose if you have got a 40 channels and 1% is the probability of the blocking A. Yani grade of service 1%. So you just have to connect the correct row and correct column. So it becomes an 29. 29 is A, capital A, which is the इसको क्या कहा था हमने? Traffic intensity था of a single cell की traffic intensity. So you can use A is equal to, you can find out A from here. यहाँ से आप A फॉर्मूला just अगर आपको A मालूम हो and you have the number of the channels as well, so you can connect over there to find out the grade of service. Grade of service of modern service. You can do this. So we have gotten a chart there. So we are not interested in this formula. इस formula को calculate करना is a hell of a job. Then what's happened? We have already computer program से हमने values निकाल चुके हैं, and that values is going to be represented over here. सर A का पता किसे चलेगा सर? जी?
ए का पता कैसे चलेगा सर? अगर आपको कहा जाए कि चैनल्स इतने हैं और यस आपको सर। कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग ये है, यस तो सर। 0.001 है फॉर इंस्टेंस आपको कहा, और आपको कहा गया कि 40 यस सर। चैनल्स हैं, तो आप कनेक्ट करें इस रो को और इस कॉलम को, यस यू सर। विल गेट 24.5। 24.5 इज ए, ये आपका ए है, ठीक है सर। दिस इज योर ए। ओके जी, सो दिस इज सेड टू ओके। बी ट्रैफिक इंटेंसिटी ऑफ अ यूजर इन अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल के अंदर ये यूजर है। फॉर इंस्टेंस के अगर आप यहाँ रेंज ऑफ वैल्यूज बहुत लिमिटेड हैं, यानी 2 से लेके 100 चैनल तक हो, बस यही बता रहा है। अगर मैं इस रेंज को, these are said to be Erlang B chart showing the probability of blocking as a function of the number of channels and traffic intensity in Erlang. Is it right? So these are the graphs has been created through the computer programs से create कर दिए गए। Now let's suppose if you have gotten 1% of the blocking, 1% of the blocking है, and the number of channels are said to be 40, 40. You see that this is a vertical column is going to be probability of blocking को, यानी grade of service को represent कर रही है, and this is said to be traffic intensity को represent कर रही है। मतलब traffic intensity से मतलब A है, A in Erlang, and the number of channels are going to be identified over here. This graph is for two number of channels. Number of channel अगर 2 होंगे तो ये ग्राफ है, नंबर ऑफ चैनल 3 है तो ये ग्राफ है, 4 है तो ये ग्राफ है, एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास है, ये उन्हीं फार्मूलों से ये ग्राफ जो है कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। नाउ एग्जामिन दैट, अगर मैं ग्रेड ऑफ सर्विस जो है वो 0.01 है, तो यू जस्ट हैव टू मूव इन दिस हॉरिजेंटल लाइन, इस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर आपने मूव करना है, एंड यू कम टू नो दैट कि 40 वाली लाइन जो है, जो कर्व है वो 40 वाला कर्व तो ये वाला है, एंड इट इज कनेक्टिंग ओवर देयर एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे कनेक्ट होगा। इससे आप बिल्कुल एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल लाइन इस पॉइंट से नीचे ले आए, ड्रॉ करें, एंड इट विल बी ओवर हेयर। यहाँ पे वो कोलाइड कर रही है, यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगी दिस पॉइंट। अब ये 10 है और ये 100 है, उसके दरमियान में यहाँ कई पॉइंट, तो अंदाजे से आप 30, 35 कुछ ले सकते हैं यहाँ पे। दिस पॉइंट दैट विल रिप्रेजेंट ए को रिप्रेजेंट करेगा। आप फिर इसको देखें जी, किस किस को समझ आई और किसको समझ नहीं आई जी? सर लेकिन हम तो ग्रेड ऑफ सर्विस फाइंड कर रहे हैं ना सर, तो हमें तो सिर्फ ए गिवन होगा सर। ये नहीं, फ्रंट हम इस वक्त जो है ना, मैं ए को फाइंड कर रहा हूँ। वी नो द नंबर ऑफ चैनल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग मुझे पता है, ठीक चैनल। है। तो मैं किसको फाइंड आउट कर रहा हूँ? ट्रैफिक इंटेंसिटी इन Erlang's विद इन अ सिंगल सेल, एक सेल के अंदर, यानी कैपिटल ए यू की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ए की बात कर रहा हूँ। हमें कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग है 0.101 है, तो आप इस हॉरिजेंटल लाइन को पकड़ लेंगे, यू विल कम हियर, और वो वाला कर्व देखेंगे जो 40 नंबर चैनल्स के ऊपर के लिए है। दिस इज अ 40, ये वाला, एंड यू जस्ट हैव टू बी फ्रॉम दिस पॉइंट, आपने एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है नीचे। यू विल गेट ओवर देयर इज अ पॉइंट। ये पॉइंट जो है, इस जगह पे जो ए की वैल्यू होगी, दैट वुड बी द ट्रैफिक इंटेंसिटी विद इन अ सिंगल सेल के अंदर होगी दैट पॉइंट। तो वो अंदाजे से लिया जा सकता है। इस 30, 35, इसकी इतनी प्रिसीजन की जरूरत नहीं है। व्हेन एवर यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू जस्ट हैव टू बी पॉइंट इट आउट हियर विद सम वैल्यू, इधर वैल्यू से आप, अगर ये ग्राफ से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है जी। आपको टेबल भी दिया जा सकता है, जस्ट हैव टू बी, यू जस्ट हैव टू फाइंड एन वैल्यू फ्रॉम यूजिंग द टेबल देयर। अच्छा, अगर आपको कहा जाता है कि आपके पास ए मौजूद है, फॉर इंस्टेंस यू हैव गॉट ए, आपके पास नंबर ऑफ चैनल्स मौजूद हैं। आई सेड टू बी चैनल्स आर, फॉर इंस्टेंस के आपके पास 16 है, 16 चैनल्स हैं, या चलें 20 चैनल्स हैं। तो हाउ कैन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग? तो आपके पास अगर 10 आपके पास ए है, तो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द वर्टिकल लाइन अप,
और आप देखें कि 16 वाला कर्व किधर है, 16 वाला कर्व जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा, फॉर इंस्टेंस कि ये वाला 16 वाला कर्व है, ये पॉइंट मिला मुझे, तो आप फिर लेफ्ट पे आ जाएं and you will come to know that this is the probability of blocking is over here, so you can find it over there. So this is a very comprehensive chart, so you can find either a probability of blocking by using that chart, or you can find out the total traffic intensity in Erlang by using that graph. अच्छा, इस ग्राफ के बारे में कोई अगर वो है आपकी समझ नहीं आया तो आई कैन रिपीट दिस, अगर आपको समझ आ गया वी कैन गो फर्दर। सर ये प्रोबेबिलिटी का तो ये है कि 10 अगर ए है ना सर, तो 16 और 10 तो हर जगह मिल रहे हैं, तो सर ये कैसे पता चलेगा कि ये 0.1 है नहीं, सर? 16 देखें, 16 का जो है ना आपका यही कर्व है, जब ये तो चूंकि बहुत करीब करीब बने हुए हैं तो हम सिर्फ अंदाजे ही इसके अंदर करते हैं, ठीक है। यस सर। तो मसलन अगर ये 16 है, फॉर इंस्टेंस ये वाला 16 है, तो ये यस वाला सर। कर्व आ रहा है, यू जस्ट हैव टू बी आइडेंटिफाई द कर्व करेक्टली, ठीक है। यस सर। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग 10 है तो आप यहां से बिल्कुल एक वर्टिकल ड्रॉ करें विद रूरल के साथ, और उसको देखेंगे ये कहाँ कनेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है फॉर इंस्टेंस, तो फिर आप जस्ट उस लाइन को हॉरिजॉन्टल एक ड्रॉ करें एंड यू विल कम टू नो ओवर हियर। अगर ये 0.2 और 0.05 के तो आप अंदाजे से कह सकते हैं इज एन 0.03 के ऊपर आ रहा है, या सर ये कर्व 0.0। स्ट्रेट नहीं है ना सर, ये स्ट्रेट नहीं है, तो 10 से स्ट्रेट ड्रा करे तो वो जिस कर्व के साथ मैच होगा तो वही वाला प्रोबेबिलिटी होगा सर साइड पे। जी हाँ, वही वाली प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब जो कर्व आपको बताया गया है इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द चैनल अवेलेबिलिटी। ठीक है मसलन सर। अगर चैनल अवेलेबल 20 है तो फिर आपने 20, मसलन अगर आपके पास 10 है, ये यस 10, सर। तो 20 वाला ग्राफ तो ये वाला है ना, ये यस वाला, दिस वन। तो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन यहाँ पे मिल गई इस ग्राफ, और ग्राफों के साथ हमारा कोई काम नहीं है, हमारा तो ठीक है चूंकि सर। ये वाला, तो ये यहाँ आप कनेक्ट किया, फिर आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं एग्जैक्टली जो यहाँ पे कनेक्ट करें, और अंदाजे से देख लें कि 0.01 और 0.02 के दरमियान में है, और ये ठीक है जरा सर। ऊपर है तो यू कैन जस्ट हैव टू बी फाइंड इट इज अ 0.0014 या 15 और व्हाटएवर इज देयर, तो आप उधर उसको आइडेंटिफाई करें। So you can ठीक है। find the probability of the blocking, you can find out the traffic intensity in the Erlang there, ठीक है जी। तो यस। ये ग्राफ इज ओनली फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग सिस्टम के लिए, इसमें डिले नहीं है, इट डजंट हैव एन डिले, एंड दिस ग्राफ इज सेड टू बी Erlang B चार्ट, ये Erlang B फार्मूला के लिए है, सो इट इज सेड टू बी Erlang B चार्ट। This is said to be if call is blocked and it is delayed, वो delayed कर दिया जाए, ठीक है। सो द कॉल इज ब्लॉक, दिस इज द अदर सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम है जिसमें कि आपको क्यू के अंदर रख दिया जाता है, यूजर को क्यू के अंदर रख दिया जाता है, इज अ वेटिंग क्यू एंड योर कॉल हैज बीन ब्लॉक्ड एंड डिलेड, और किसी डिले के बाद, और दैट डिले इज आल्सो अ लिमिटेड डिले, ऐसा नहीं है कि आपको बस डिले फॉर एवर कर दिया जाए और घंटा घंटा आपको इंतजार किया जाता है, नहीं, ये तो नॉर्मली आपके मोबाइल्स के अंदर ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिलेड है वो आपका लैंडलाइंस के अंदर होता था इस्तेमाल, मोबाइल्स के अंदर नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन मोबाइल्स के अंदर इस हद तक इस्तेमाल होता है कि यू नीड टू बी अ डिले फॉर अ फ्यू सेकंड्स, नॉट मोर देन दिस। बस आपने कॉल को स्टैब्लिश किया, आपकी कॉल रिंग थोड़ी देर बाद होना शुरू हुई क्योंकि आपको क्यू के अंदर रखा हुआ था, इज इट राइट? सो यू आर रिमेन इन अ क्यू, लेकिन दैट क्यू इज अगेन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, किसी खास पीरियड के लिए था, तो डिले मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन, डिले must not be delay must be less than some specified time, किसी टाइम से कम, यानी लेट्स सपोज आप कहते हैं कि 10 सेकंड का डिले दिया गया, तो 10 सेकंड के बाद आपकी कॉल ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। सिस्टम ने कहा हुआ है कि 10 सेकंड का आपको डिले मिल सकता है, और आप एग्रीड अपॉन, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है मोबाइल कंपनी के साथ, ठीक है ये डिले मैं टॉलरेट करूंगा। सो द 10 सेकंड के लिए यू इफ यू हैव बीन, आपको कहा है कि 10 सेकंड के लिए आपका डिले आ सकता है, सो यूर डिले व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका डिले 10 सेकंड से कम है, तो ये एक और किस्म की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। एंड दिस विल बी मॉडल बाय यूजिंग द Erlang C फार्मूला, Erlang C फार्मूले से मॉडल होता है, ठीक है जी। अब
this is the Erlang C formula. This is a probability that delay is greater than 0. यानी कि आपको डिले मिलना, पहले तो डिले मिलेगा ना, और डिले मिलने के बाद फिर कितनी देर डिले मिलेगा ये अलग प्रोबेबिलिटी है. सो दिस इज नॉट अ ग्रेड ऑफ सर्विस. देखें जो पहला फार्मूला था उसके अंदर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग को ग्रेड ऑफ सर्विस कहते थे, लेकिन यहाँ पे हम Erlang C फार्मूला को ग्रेड ऑफ सर्विस नहीं कह रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी के कॉल आपकी डिले हुई. मसलन आपका चैनल अवेलेबल नहीं था एंड योर कॉल हैज बीन डिलेड, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी मॉडल विद अ सी. दिस इज नॉट अ ग्रेड ऑफ सर्विस. ये ग्रेड ऑफ सर्विस नहीं है. ग्रेड ऑफ सर्विस क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी दैट डिले इज ग्रेटर देन सम स्पेसिफाइड टाइम, किसी स्पेसिफाइड टाइम से ग्रेटर है. यू सी ओवर हियर, दिस इज अ ग्रेड ऑफ सर्विस in which the probability that delay is greater than some time, किसी टाइम से थोड़ा जो आपका टॉलरेट टाइम है और जो आपका थ्रेशहोल्ड है, थ्रेशहोल्ड टाइम है, डिले उससे बढ़ गया, तो आपकी ग्रेड ऑफ सर्विस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड विद दिस. तो Erlang C formula is representative for probability the delay has been occurred and it is greater than 0. Again, we have a complex formula is over here. A power of C. C is the number of channel. A is a grade, is basically traffic intensity in a cell, and it is all going to be evaluated by using this formula. Again, we cannot do this by using the even a calculator. Calculator से तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम से इसको कैलकुलेट किया जाता है by using a computer programs. Okay. Grade of service is then equal to probability that delay is greater than t. Delay is greater than some threshold. यानी 10 सेकंड का अगर डिले आप टॉलरेबल है और एग्रीड अपॉन है, और 10 सेकंड के अंदर अगर कोई चैनल अवेलेबल हो जाता है सिस्टम को, तो दैट विल बी एलोकेटेड टू यू, टू द यूजर. अगर 10 सेकंड से बढ़ जाएगा, देन व्हाट विल हैपन दैट योर कॉल विल बी ड्रॉप्ड. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉल ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी मॉडल ओवर हियर. अच्छा, प्रोबेबिलिटीज, आई डोंट नो के यू नो अबाउट द प्रोबेबिलिटीज. कहीं आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है रैंडम सिग्नल एंड नॉइसेस? पढ़ा था ना जी. तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो प्रोबेबिलिटी को बड़ा एक्सप्लोर किया जाता है. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट देयर. तो दो तीन किस्म की जरा से मैं आपको रिकॉल करा दूं. वन इज सेड टू बी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, वन इज सेड टू बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तीसरी चीज होती है एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी. तो थोड़ी सी मैं मिसालों से आपको बताना चाहूंगा. The marginal probability, let's suppose one box having two balls. एक बॉक्स के अंदर दो बॉल्स हैं, one is red, the other is blue, for instance. तो what will be the probability कि आप रेड बॉल को निकाल देंगे? What will be that probability? Sir, 1/2. Is 1/2. That's very fine. It's said to be 0.5 is a probability that you are going to be extracting a red ball, and likewise the same probability is for the extracting a blue ball as well. Is it right? So that is a 1/2. That's fine. Once you have a blue ball out of the box, then what would be the probability to extract a red ball? 1. It's 1. It's 1. That's fine. It means to be the first one was the marginal probability. जो पहला probability थी वो marginal probability थी. And the second one, that is the probability is dependent upon the event. One event has been occurred. एक event occur हो चुका है. अब दूसरी की जो probability है, that will be the conditional probability because the event has been the event has been occurred. Is it right? तो दूसरी जो है वो आपके पास क्या होगी, कंडीशनल होगी, क्योंकि ब्लू आप एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं. द कंडीशन इज दिस, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल व्हेन द ब्लू हैज बीन एक्सट्रैक्टेड? तो दैट इज 1. तो दैट विल बी सेड टू बी अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. एंड the both of these, the probability of the marginal probability and the blue and दोनों को combine करके, that will said to be a joint probability of the two events. दो events की joint probability होती है.
तो जब आप इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वी विल हैव टू सॉल्व इट विद द जॉइंट प्रोबेबिलिटी से हम उसको सॉल्व करते हैं. ओके, सो दैट्स वेरी गुड. तो इसके बाद you see that whenever you are going to find out the grade of service for the Erlang C formula, then what's happened? The first event is this: the call has been delayed. आपकी कॉल डिले हो चुकी है. And the second thing, the delay, is it a greater than a threshold? Threshold से ज़्यादा बढ़ गई है while the delay has been occurred. और डिले अकर हो चुकी है. So that is basically a joint probability to find out the grade of service. Grade of service. So you see that is the product of the two probabilities. One is said to be marginal, the other is said to be conditional. The marginal is this: the probability that delay has been occurred. Delay हो चुकी है. So this is the first. Multiply by the probability the delay is greater than t while the delay becomes occurred. So this is said to be conditional. The product of this is said to be the joint probability. इन दोनों का joint event है कि delay हो गया है. अच्छा, delay हो गया है तो फिर क्या delay 10 सेकंड से ज्यादा बढ़ गया है, वो threshold जो था, और delay अकर हो चुका है already. So the grade of service is going to be identified with that particular phenomena. This formula is over here. The probability that delay has been occurred is going to be identified with that particular formula. Is an Erlang C formula से हम identify करते हैं. And the delay occurs is greater than t while the delay has been occurred is going to be identified with that statistical रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन. यानी ये वाला जो पार्ट है वो इससे एक्सप्रेस हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो पिछले इक्वेशन से एक्सप्रेस हो रहा है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस के आपको कहा जाए कि इस ड्यूरेशन के लिए है t इज इक्वल टू, आपको c दे दिया जाए, a दे दिया जाए, h दे दिया जाए, यू कैन फाइंड आउट दिस क्वांटिटी. इस क्वांटिटी को आप फाइंड आउट कर सकेंगे. एक और किस्म की भी होती है, उसको हम कहते हैं एवरेज डिले. एवरेज डिले वो इससे बिल्कुल अलग चीज है जी. एवरेज डिले. So average delay in a queue system is going to be represented that d is equal to probability that delay is greater than 0 and h divided by ca. H is again the duration of the call, c is said to be number of channel, and a is the traffic intensity over there. So you can find out the delay. ये आपके पास seconds के अंदर आएगा. That value will be into the seconds के अंदर. ये आपके पास average delay को average एक average जिस तरह कि हम कहते हैं कि average calls कितनी हुई हैं, इसी तरह हम कहते हैं कि एवरेज डिले सिस्टम के अंदर कितना हो रहा है, यानी कि एक यूजर को एवरेज डिले कितना मिल रहा है. सो दैट इज द सेपरेट मेजर ओवर हियर, सो वी कैन यूज फॉर द कैलकुलेशंस. तो ग्रेड ऑफ सर्विस की जो फॉर्मुलेशन है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे. दिस इज द Erlang C chart. Erlang C chart है. सो यू कैन फाइंड आउट अगेन इफ आपने चार्ट को सही देखना है. मसलन अगर आपको कहा जाता है कि द सिस्टम इज, जो सिस्टम है वो Erlang C पे काम करता है, देन यू विल हैव टू फाइंड अ वैल्यू फ्रॉम द Erlang C चार्ट. तो आपने फिर इस चार्ट को नहीं देखना. ये दिस इज फॉर द Erlang B फार्मूला, दिस इज फॉर द Erlang C फार्मूला, इज सेड टू बी Erlang C चार्ट. So if a call has been delayed, if you say that Erlang C chart showing the probability of a call being delayed, जो delayed हो चुकी हैं as a function of a number of channel and traffic intensity in Erlang. So phenomena is very much similar as it is described into the previous chart. जो previous chart के अंदर जिस तरह का phenomena represent किया गया था, वही phenomena यहाँ पे represent किया. You can find the unknown values by using the same phenomena. उसी phenomena को आप use करके you can do this. जी, anybody having a questions? No sir. So this is all about the traffic. This is a trunking system. Trunking system को अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. चैप्टर नंबर 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 3, you just note it down. In a chapter number 3, we have some examples in this. उसके अंदर कुछ examples हैं. Example related to the trunking theory. तो you just have to solve these examples. उन examples को solve करें जी.
just have to solve these examples. ठीक है, exercise these are said to be examples into the chapter number 3. बुक का क्या नाम है ये? Wireless Communications, Principles of Wireless Communication by, जी नाम मुझसे भूल गया। सर भाई थियोडोर इस तरह कुछ है। थियोडोर, हाँ जी हाँ, थियोडोर रपापोर्ट, रपापोर्ट की बुक है, थियोडोर रपापोर्ट की बुक है. You just have to be follow this book. In a chapter number 3, what's happened, there are the numerical related to the trunking theory. You need to solve these questions. These are very important for the examination point of view से. ठीक है, hopefully we will discuss it into the next class. Next class के अंदर हम इसको thoroughly discuss करेंगे. If you have any problem with that, आप उसको, ये जो आज की थ्योरी हमने देखी है, all the rules which has been described over here, that you can use the same phenomena into the that to solving for these questions. उन questions को solve जरूर करना है आप लोगों ने, otherwise that will be problem in your exam के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा. जी सर. सर ये एग्जाम के हवाले से जरा बात करें कि जी जी, ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज शॉर्ट आंसर. अच्छा, एग्जाम ऐसा होगा ना कि आई एम नॉट गिविंग यू एन एमसीक्यूज. जी सर. I will like to give you a questions. आपको questions दूंगा, and this is a open book questions, and you have to solve this. आपको solve करना पड़ेगा within a prescribed time, and you need to submit it onto the Google Classroom. ठीक है जी. तो वो very highly conceptual questions होंगे, and if you know that, you can solve this, otherwise you cannot solve this. Is it right? Secondly, एग्जाम में प्रॉब्लम्स वगैरह ये तो नहीं आ सकेंगे ना? अगर प्रॉब्लम आएगा सर तो हम उसको किस तरह मतलब सॉल्व करेंगे? नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगे ना जी, प्रॉब्लम्स ही दूंगा जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. ठीक है, तो सर उसमें मतलब सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, उसको सिर्फ एक को, क्योंकि सर उसको हम किस तरह करेंगे? सर कह रहा है ओपन बुक पेपर होगा. ओपन बुक नहीं सर, सबमिट कैसे करेंगे, ये मसला है. वो तो समझ आई है. अब हम टाइपिंग करेंगे सर, तो प्रॉब्लम को किस तरह कंप्यूटर में सॉल्व करेंगे? ओके, आई विल सॉर्ट आउट, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है. ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आप लोगों को सारा फिनोमिना बताऊंगा कि हाउ इट विल बी हैपेंड. ठीक है, सो विल डू दिस. सेकेंडली, आई वुड लाइक टू हैव एन वाइवा एग्जाम फ्रॉम यू एज वेल. तो उसके साथ वाइवा एग्जाम भी करेंगे इंशाल्लाह. तो वाइवा एग्जाम के अंदर अगर आपने कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ की है इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो फिर आप वाइवा में पकड़े जाएंगे. ठीक है, तो सर उसी दिन तो नहीं होगा ना जिस दिन पेपर होगा, उस दिन वाइवा तो नहीं होगा ना? नहीं, उसी दिन सब कुछ करेंगे, उसी दिन सब कुछ. लेकिन सर ये तो मुश्किल नहीं हो जाएगा सर, अगर मतलब एक घंटे का एग्जाम होगा और इसलिए कि वाइवा इज वेरी मच रिलेटेड टू द आस्क्ड क्वेश्चंस. नहीं सर, मतलब हमारे दूसरे दिन भी एग्जाम होगा ना, दूसरा पेपर होगा, तो सर मतलब इतने ज्यादा लड़के हैं सर, ये हम फिर कब फारिग होंगे, फिर दूसरे पेपर की तैयारी किस तरह करेंगे? दिस इज द प्रॉब्लम. सर ये जो वाइवा है ये नेक्स्ट वीक, अगर उसी चलें इस तरह कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में वाइवा करेंगे. हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं वाइवा करूंगा. दैट्स फाइन. बस वो निकल सकते हैं कोई ना कोई ऑप्शंस, सो वी विल यूज एनी ऑप्शंस. ठीक है, तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कन्वर्सेशन के साथ एंड एग्रीड अपॉन सिस्टम के अंदर वी विल डू ऑल दैट. ठीक है, सो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू लर्न. आप लोगों को अगर मैं आप सामने होते तो मैं बहुत चीज़ें इसमें आपको बताता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें रिलाई करना है इसी सिस्टम के ऊपर, एंड वी हैव टू, बिकॉज इट विल बी अ प्रोलॉन्ग सिस्टम. ऐसा नहीं होगा कि जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं. सो वी हैव टू बी स्टिक विद दिस. तो हमने अपनी डिग्रियां भी वक्त पे करनी है, अपना वक्त भी नहीं ज़ाया करना. वी जस्ट हैव टू बी कॉम्प्रोमाइज समथिंग, किसी चीज़ों के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा. ठीक है जी, तो आप इसको लर्न करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें. नेक्स्ट क्लास आप जब आएँ, सो आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इसको पढ़ा हो, और फिर आप मुझसे बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन इसके अंदर करें.
So inshallah I will give you answer of this. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है सर, आप वो लिंक्स बी चार्ट में जैसा या सी चार्ट में जैसा, कौन से बी चार्ट में? सर कोई भी चार्ट हो सर। सर अगर हम, जी सर, हमें सर ग्रेड ऑफ सर्विस गिवन होने सर, और इंटेंसिटी सर गिवन होने सर। सर तो इसके जी। लिए स्पेसिफिक सर प्रोबेबिलिटी और सर इंटेंसिटी के लिए सर स्पेसिफिक सर चैनल होंगे ना सर, वो तो चेंज नहीं होंगे ना सर? हाँ, if you know the intensity, for example A, तो आपके पास लेट्स सपोज 10 है और आपको कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ 1% है, तो आप नंबर ऑफ चैनल्स मालूम कर लें। यू जस्ट गो अप 10 के ऊपर आप चलते रहें, और जहाँ पे आपके पास ये 1 आता है प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ देखें कौन सा ग्राफ मीट कर रहा है। तो जहाँ पे वो ग्राफ मीट कर रहा होगा, यू जस्ट हैव टू गो एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ द चैनल्स एज वेल। सो दिस इज सेड टू बी अ 3-dimensional चार्ट है, ये आपके पास 3-dimensional चार्ट है। So you can find any quantity if you know the rest two. दो quantities आपको पता है, you can find out the third quantity very easily by using this chart. जी सर मेरा क्वेश्चन था ये चैनल फिक्स कैसे हो सकते हैं सर? चैनल तो फिक्स वो नहीं है सर। हाँ, नहीं, चैनल्स जो हैं वो आपको सेल्स के अंदर फिक्स चैनल असाइनमेंट्स भी होती हैं ना। हाँ जी So, सर, फिक्स भी। हाँ, तो यू जस्ट फाइंड आउट इफ यू हैव अ नंबर ऑफ चैनल्स। अगर आपको कह दिया जाता है कि चैनल्स इतने ही अवेलेबल हैं, so that for that channel capacity के लिए you have to design the trunking system. So that happens there. जी, anybody else? Okay, so we just move forward. दो चीजें मैंने आपको बताई थी, one is said to be capacity and the other, ये वो चैप्टर खत्म हो गया। You just have to be कुछ जनरल चीजें that is related to the wireless communication is very important. ठीक है, तो कैपेसिटी के बारे में बताया था। इफ यू इंक्रीज द कैपेसिटी you will lose the quality. quality. So there is a trade-off between the capacity and the quality. Quality and capacity can trade-off. If you have a good capacity, you will lose the quality. If you have a good quality, you will lose the capacity. So these are inversely proportional to one another. एक और capacity what does it mean? दो किस्म से हम capacity को increase कर सकते हैं. If you have a more number of channels, आपके पास channels ज़्यादा हो जाए, और if you have a much more data rate, आपका data rate बहुत तेज हो जाए, is it right? So you can in both cases, if you have a more number of channels, you can accommodate more number of the users, ज़्यादा number of users को accommodate कर सकेंगे. If you have a much bigger data rate आपके पास बढ़ जाए, तो भी आप बहुत सारे यूजर्स को जो है एकोमोडेट कर सकेंगे. सो दीज आर द टू कैपेसिटीज. लेकिन एक और कैपेसिटी है जिसे हम शैनन कैपेसिटी कहते हैं. शैनन कहता है कि एक नॉन बैंडविड्थ के लिए यू कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम दैट बिट्स पर सेकेंड. आप एक सिस्टम के अंदर इससे ज्यादा आप जो है बिट्स पर सेकेंड को इंक्रीज. सो देयर इज अ लिमिटेड bandwidth is available into the system. सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ द बिट्स पर सेकंड आप ट्रांसमिट कर सकें. आप समझ में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड कब ट्रांसमिट होंगे? एनी एग्जांपल, हाउ कैन वी ट्रांसमिट इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड? वो क्या कंडीशन होगी सर जब हमारी बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो. बैंड तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इनफाइनाइट बिट्स पर सेकंड इज अ बैंडविड्थ इनफाइनाइट होगी ना. लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी? द ड्यूरेशन ऑफ द बिट इज 0. यानी बिट का ड्यूरेशन क्या होगा? 0 हो जाए. तो 0 यानी कि इम्पल्स. तो अगर बिट का ड्यूरेशन 0 हो जाए तो इम्पल्स की हाइट कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी. ये चीजें टेक्निकल चीजें हैं, ये आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के कोर्स से वाजे मैथमेटिक्स से पता लगती हैं. जो कम्युनिकेशन सिस्टम का कोर्स आपने 6th सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा या 5th सेमेस्टर के अंदर, आई डोंट नो. तो at that point of time mathematically we can express that
if the duration of the bit is now 0, so the channel, so the bit duration cannot be 0, so the bandwidth cannot be infinite news, bits per second infinite news. If that is not infinite, it means to be the capacity of the system is limited, वो आपके पास limited है, and it is going to be identified, it is going to be described by the Shannon ने इसको डिस्क्राइब किया इन 1940s के अंदर, एंड दिस इज सेड टू बी शैनन कैपेसिटीज के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा इसको देख लें। शैनन मैंने पहले तो नहीं बताया आप लोगों को जी, कई चीज़ें रिपीट ना हो जाए। नो सर, ये नहीं बताया, ठीक है जी। आपने शैनन कैपेसिटी पहले भी पढ़ी होगी इन दी अदर कम्युनिकेशन लाइक डेटा कम्युनिकेशंस के अंदर, यू मस्ट हैव टू बी गॉन थ्रू द शैनन कैपेसिटी। अच्छा, जरा सा इधर गौर से देखें जी, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बिलीव मी, इफ यू अंडरस्टैंड दिस तो ये आपको हमेशा चीजें याद रहेंगी। फॉर इंस्टेंस, आई वांट टू ट्रांसमिट x bits. What I am going to be receive at the receiver is x estimate bits, यानी कि वही exactly x मुझे नहीं मिलता है at the receiver, but estimate of x मिलता है, bits per second मिलता है। Why? Because there is a property of the channel included there, यानी पावर P1 से मैंने ट्रांसमिट किया था, वो वायरलेस चैनल की ट्रांसफर फंक्शन के साथ जो है कन्वॉल्व होके इट इज नाउ गोइंग टू बी रिसीव as an a power P2 at the receiver. Now at the receiver, one other factor is going to be included there, which is said to be noise, जिसको हम noise कहते हैं। That is a additive thing is over there. Is it right? Yeah, you are additive. तो signal to noise ratio is an important there. आपको क्या signal मिला, यानी कि signal power divided by the noise. If you have noise, denominator के अंदर जो noise है, डिनोमिनेटर s डिवाइड बाय n, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, s डिवाइड बाय n is said to be noise, is an additive wide Gaussian noise. So what will happen that signal power, if the signal power is much more than n noise, then what will happen that the signal to noise ratio is very good. सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखिए ना, सिग्नल एस एन आर आपको नजर आ रहा है जी, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। जी आप ऐसा करें कि एक पेज के ऊपर लिखें सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर, लिख लिया आपने, सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर। इफ नॉइज पावर इज मोर देन सिग्नल पावर, तो मतलब ये है कि सिग्नल तो नॉइज के अंदर डूब के रह गया ना, द सिग्नल विल नॉट बी आइडेंटिफाइड एट द रिसीवर के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। So for a good signal, we must have the signal power is much more greater than the noise power. Noise power से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो signal to noise ratio, if as much as it is greater, we have. अगर आपका noise ज्यादा है और signal कम है, then what will happen? The error bits will be received at the receiver. Receiver पे error bits आपको मिलेंगे, ठीक है। For instance, if you are going to be transmitting 100 bits, and at the receiver you are going to receive a 99 correct bits, but one is said to be incorrect bit due to the noise, वो खराब हो गया था। तो bit error rate आपके पास क्या होगा? Bit error rate, BER, is a one quantity said to be bit error rate. The bit error rate will be 1 out of 100. 1% आपको बिट एरर रेट मिल रहा होता है। तो व्हाट विल हैपन दैट यू विल नीड टू रीट्रांसमिट दैट बिट, उस बिट को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैपेसिटी जो है वो किसको कहते हैं? कैपेसिटी से आपको बिट जो है, नंबर ऑफ जो आपको इंफॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली करेक्ट कितने बिट्स मिलते हैं, सो दैट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम, and it is going to be described with the Shannon. Shannon ने इसको describe किया। उसने कहा कि the capacity of the system will be is equal to log to the base 2, क्योंकि bits के लिए, bits per second के लिए, तो log 2 का उसने इस्तेमाल किया है, and log 2 of 1 plus SNR। इस B को अभी आप भूल जाएं, ये जो ब्लू में लिखा हुआ B है इसको आप भूल जाएं।
So log 2 1 plus SNR. If SNR is good, let's suppose कि SNR आपका 0 है. How the SNR can be 0? जी Sir, if signal power and noise power are equal. नहीं, इक्वल पे कैसे? Maybe. SNR की बात कर रहा हूँ मैं, SNR, सिर्फ SNR की, लॉग की बात नहीं कर रहा मैं. SNR सिग्नल टू नॉइस रेशो ये कब 0 होगी? जब सिग्नल की पावर 0 और in other case the noise power is become infinity. With denominator है, any signal power divided by infinity will give you a 0. Is it right? So whenever this is 0, तो log of 2 1 किसके बराबर होगा? ये 0 हो गया तो log of 2 1 is equal to 0. The capacity is 0. It means to be no bit is received over there. कोई बिट आपका रिसीव नहीं हुआ. ठीक है. So the capacity is directly proportional to SNR. SNR के साथ जुड़ रहा है. अगर आपका SNR बढ़ता रहेगा, आपकी bits per second according to the Shannon capacity will be increases. Now इस B का इस्तेमाल ना करें तो that would said to be is C is the bits per second per hertz के लिए, यानी 1 हर्ट की सिग्नल के लिए बिट्स पर सेकंड हो गए. लेकिन कैपेसिटी को आपने, अगर मैं डिस्क्राइब कर सकूं नीचे इफ यू सी दैट फिगर्स, नाउ यू सी दैट दीज आर द बिट्स. ये आपके पास बिट्स हैं, नजर आ रही हैं आप लोगों को जी? कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को? पॉइंटर. Now notice that the duration of one bit is, let's suppose 1 second. अगर 1 second का duration है एक bit का, then what will be the frequency band of this? 1 over 1 second is equal to 1 hertz. तो ये आपके पास हर्ट में आ गया 1 हर्ट तक. ये देखें ब्लैक नजर आ रहा है आप लोगों को, is 1 hertz. Now let's suppose the duration of the same pulse is 1 millisecond. तो 1 over 1 millisecond will give you the frequency. Frequency आपको देगा 1 over 1 millisecond. That will be equal to 1 kilohertz का बैंडविड्थ आपको मिल गया. तो ये मिली के सेकंड कहाँ से आया सर? जी ये मिली सेकंड कहाँ से आया? देखिए मैंने कहा कि फॉर इंस्टेंस मैंने एग्जांपल दी, ये एक बिट है आपके पास, उसकी ड्यूरेशन 1 सेकंड थी. तो 1 सेकंड की ड्यूरेशन की पल्स का फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 हर्ट्ज, यानी 1 over t is equal to फ्रीक्वेंसी ना, जी सर. that will be equal to 1 हर्ट्ज. लेकिन इसी पल्स की ड्यूरेशन अगर 1 मिली सेकंड हो जाए तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1 over 1 मिली सेकंड 1 किलो हर्ट्ज हो जाएगी. तो बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज हो गई. अब 1 सेकंड के अंदर 1000 बिट्स ट्रांसमिट हो सकेंगी. 1000 बिट्स ट्रांसमिट. इट मींस टू बी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर बैंडविड्थ तो ज्यादा हो गई, लेकिन स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन इज नाउ इनॉर्मसली 1000 टाइम इंक्रीज हो गई. इसी तरह इफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेम पल्स इज नाउ 1 माइक्रोसेकंड, अगर 1 माइक्रोसेकंड हो जाए, then what will happen that the bandwidth will become as an 1 megahertz हो जाएगी. तो the bandwidth is the frequency domain के अंदर वो बहुत ज्यादा हो गई. Is it right? तो इसका मतलब है कि स्पीड तो सिर्फ SNR पे तो नहीं डिपेंड, स्पीड तो आल्सो डिपेंड है बैंडविड्थ के ऊपर है. मसलन आपका ड्यूरेशन कम हुआ तो बैंडविड्थ बढ़ गई. अब ये बैंडविड्थ जो है वो सिंक फंक्शन होता है. ये आपकी उसके कोर्स में कम्युनिकेशन के कोर्स के अंदर जो मैथमेटिकल कोर्स है उसके अंदर जो है ये सारा डिस्क्राइब हुआ है कि सिंक फंक्शन होगा. तो इसका मतलब हुआ कि ड्यूरेशन कम होने से बैंडविड्थ बढ़ती है और ड्यूरेशन कम होने से स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड इंक्रीज हो जाते हैं. तो इसका मतलब है कि कैपेसिटी is not only dependent upon the SNR, but it is also going to be dependent upon the bandwidth as well. Bandwidth के ऊपर भी dependent है. For example, अगर आप GSM की बात करते हैं तो ये bandwidth यहाँ पे फिर क्या होगी उसके लिए? That will be equal to 200 kilohertz की होगी. 200 kilohertz की होगी. So the capacity for a given bandwidth can be calculated by using the Shannon formula. जब आपने B लगा दिया तो ये बिट पर सेकंड पर हर्ट्ज नहीं रहा. That will become as bits per second. That will become as bits per second. So we have got तो bit error rate का आपको पता लग गया कि bit error rate लेट में 1 over
10 पावर ऑफ 2 हो या 10 पावर ऑफ 10 हो या 10 पावर ऑफ समथिंग नंबर ऑफ हो, so that the bit error rate is now going to be represented over there. Is it right? So Shannon capacity के ऊपर I hope you understand what you mean by the Shannon capacity. बहुत important term है, and it is an Shannon capacity for any kind of the communication. For instance, अगर आप line के ऊपर communicate कर रहे हैं तो Shannon capacity वहाँ पे भी आप calculate कर सकते हैं by using this formula. अगर आप wireless communication कर रहे हैं so you just have to know the SNR को आपको देखना पड़ेगा, and then you have just use is in this formula for the given bandwidth, किसी खास bandwidth के लिए. अच्छा सर, ये जो सी की यूनिट है ना सर, बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज, ये बी के अलावा है सर? अगर ये बी के अलावा, इसीलिए मैंने सी को ब्लैक लिखा, तो सी के ऊपर फार्मूले में जो ब्लैक है उसके लिए ये, तो बी को मैंने दरमियान में लिखा है इसलिए कि बी और फिर सी इज इक्वल टू बिट्स पर सेकंड ब्लू लिखा मैंने, इसलिए कि बी को इंक्लूड कर दिया था मैंने इसमें. So the hertz is going to be removed from here. अगर आप B को भी साथ मिला दें, तो capacity is only not only dependent upon the SNR, but it is also going to be dependent upon the B. The bandwidth also, bandwidth के ऊपर भी dependent होती है. समझ गए कि नहीं यार? 70% समझ गए. जी सर, समझ गए. यार बस अल्लाह दे पोए का बस देना जाए आपको निशम पोए लिखा. ठीक हो गया? एक और स्लाइड रहती है सर, बस सर ये बाकी 15 दिन के लिए सर बस कैपेसिटी खत्म हो गई सर. जी कैपेसिटी खत्म सर ना बल क्लास की जी सर. आज के लिए इतना ही काफी है. देन वी हैव अ क्लास ऑन मंडे. ओके, इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ये जो आपको डीबीज का मैंने बताया था, यू विल हैव टू बी यूज डीबीज इन आवर प्रॉब्लम्स, सो यू मस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है जी, इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच, ये आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया. एंड देन वी विल हैव टू मीट अगेन ऑन मंडे इंशाल्लाह. पहले ये देखें कि किसको कौन इसको शेयर कर सकता है. शयानुर रहमान, ये कौन है जी? शयानुर रहमान.